Hello dear learners, hoping you people are good and great and you people are doing preparation for your upcoming exam. Dear, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली सिलेबस. हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विच इज गोइंग टू कम इन योर हाफ ईयरली एग्जाम, राइट? सो let's start and discuss each and every chapters including chapters from your both book which are prescribed in your class 11th English, as well as we'll cover the writing section and we will see the question sample paper also how it is going to come in the exam. तो चलिए शुरू करते हैं. So dear, as I told you that we are going to discuss about sample paper and we will discuss each topic. So first topic, जो first chapter है आपके सिलेबस में जो हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है, वो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें. वी विल सी द डिटेल समरी, उसके बाद शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी हम डिस्कस करेंगे. हम उस चैप्टर से रिलेटेड हर उस पॉइंट को देखेंगे विच इज सपोज टू आस्क इन योर एग्जाम और ऑन विच क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड बाय द examiner. So let's start. Portrait of a lady है क्या? This video is going to be bilingual so that everybody is able to understand it very clearly. See, Portrait of a Lady is a chapter which is written by Kushwant Singh. Kushwant Singh कौन है? Kushwant Singh is a very famous writer from Punjab who live in, basically he belong from Punjab but he lived in abroad and उन्होंने बहुत सारी social issue और topics पे अपनी writing की है और social issue along with family टॉपिक्स पे इन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स और स्टोरी लिखी हैं. तो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज डायरेक्ट, दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड बाय कुशवंत सिंह टू हिज ग्रैंड मदर. एक्चुअली ये चैप्टर केवल कुशवंत सिंह द्वारा उनकी ग्रैंड मदर को नहीं, ये इट इज स्टैंड फॉर एवरी वन ग्रैंड मदर, क्योंकि द थिंग विच कुशवंत सिंह वांट टू थ्रो दिस चैप्टर वो है बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड सन. ठीक है, इस बॉन्ड को उन्होंने दिखाने की कोशिश की. एक्चुअली व्हेन द स्टोरी स्टार्ट यू सी दैट कुशवंत सिंह इज एक्सप्लेनिंग यू, टेलिंग यू अबाउट हिज चाइल्डहुड. ठीक है, एक्चुअली कुशवंत सिंह लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन पंजाब. जब उनके माँ बाप शहर में थे, पेरेंट्स वेंट आउट फ्रॉम पंजाब टू द सिटी फॉर मेकिंग देयर लाइवलीहुड, अर्निंग करने के लिए, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए. जब वो गांव से बाहर चले जाते हैं तो एट दैट मोमेंट कुशवंत सिंह रिमेन विथ हिज ग्रैंड मदर, राइट? एंड ग्रैंड मदर टेक केयर कुशवंत सिंह, है ना, 24/7 और 24 घंटे कुशवंत सिंह की देखभाल कौन करता था? उनकी ग्रैंड मदर, राइट? फ्रॉम बाथिंग, कुकिंग, फीडिंग हिम फूड, okay, taking him to the school, everything is done by Kushwant Singh grandmother. Their bond, their relationship was very good at in village. अब अगर हम एक तरफ से देखना शुरू करें समरी को, तो समरी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन गिवन बाय कुशवंत सिंह. ही टेल यू दैट माय ग्रैंडमदर हु इज 80, राइट, हु इज 80 and she looks, she seems to me like that she is at the same age from long time. उनकी जो एज है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा. she seems, now it seems that her age, she is neither growing nor she is neither getting older as it is since long. And actually in Kushwant Singh house there was a portrait of Kushwant Singh grandfather also, and the portrait उनकी ग्रैंडफादर की थी. एंड इन दैट पोर्ट्रेट कुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज लुकिंग सो एज्ड, हैविंग अ वाइट टर्बन, हैविंग बियर्ड, टर्बन, लूज फिटिंग क्लॉथ पहने हुए. और उनको देख के कुशवंत सिंह को ऐसा फील होता है कि दैट मैन जिसकी फोटोग्राफ है, मतलब उनके ग्रैंडफादर, ही कुड नेवर बी ए ग्रैंडफादर, एंड वो कभी ग्रैंडफादर नहीं हो सकते, और ही कुड नेवर बी द हस्बैंड ऑफ कुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, क्योंकि ही इन द फोटोग्राफ कुशवंत सिंह ग्रैंडफादर लुक लाइक forefather, 100 year old, centuries old, and so he can't be father or grandfather, he could be forefather. ओके, आप सकते हैं, वो forefather हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारे ग्रैंडसन हो. ऐसा कुशवंत सिंह सोचते थे इन ए चाइल्डहुड, बिकॉज इन चाइल्डहुड वी डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर, क्लियर आइडिया. सो हम कभी कभी
कुछ गलत आइडियाज भी अपने दिमाग में रख लेते हैं किसी के बारे में, whether it is grandmother, father or any, right? Later what happened? After that what happened? After this, Kushwant Singh started telling you that how he spent his time with his grandmother. इनकी grandmother जो 80 plus है, having fair complexion, white hair, bend होके चलती हैं. And what she used to do? She used to chant mantra with the help of rosaries. And वो केवल खुद ही chant नहीं करती है. She grandmother try to teach Kushwant Singh also. वो सोचती है कि Kushwant Singh क्या करें? Kushwant Singh should learn these mantras. And she make chapatis for Kushwant Singh and she give tiffin to Kushwant Singh. And not only this much, every day grandmother used to go to school with Kushwant Singh. हर रोज वो कहाँ जाती थी? कुशवंत सिंह के साथ उनके स्कूल में जाती थी. The school was nearby the temple. And during the time, at the time when Kushwant Singh used to study in the school, grandmother used to sit in the temple and chanting mantra, right? And after school, grandmother and Kushwant Singh used to return together. And grandmother is animal lover. अब देखेंगे स्टोरी में, grandmother loves animal. And so when Kushwant Singh and grandmother return every day, return after school, grandmother is used to keep stale chapati. Stale chapati का मतलब बासी चपाती है, एक दिन पहले जो चपाती बनती है उसको. And she used to tear into small pieces. And both Kushwant Singh and grandmother used to throw these chapatis to the street dog. स्ट्रीट पे बहुत सारे डॉग होते हैं, उनको ये चपाती वो फीड करते आते हैं, फेंकते आते हैं. एंड each street dog used to follow grandmother and Kushwant Singh up to their house. And this was their regular schedule. And Kushwant Singh was very happy with grandmother and grandmother as well. Or grandmother like Kushwant Singh village school, because जो पंजाब में था, because in that school Kushwant Singh used not only learn the basic subject but also moral teaching and spiritual learning. इसलिए grandmother उसको पसंद करती थी. And one more thing, the things were taught in the common language, जिससे grandmother को भी समझ में आता था कि क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही. After this what happened? There is change came in grandmother and Kushwant Singh relationship, right? There is change came. This thing, ये सारी चीज़ें मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं. I am explaining from my side. If you want, you can go through this easily, right? After that, what happened? Kushwant Singh grown up. Kushwant Singh parents came or they took Kushwant Singh and grandmother both to the city. दोनों को city शहर ले जाते हैं, right? और फिर यहीं से change होता है Kushwant Singh between the relationship of Kushwant Singh and grandmother. Question पूछा जा सकता है कि which point, at what point there is change came in the relationship between grandmother and grandson, या फिर Kushwant Singh and his grandmother. So this question can be asked. Now after that what happened? Kushwant Singh shifted to the city along with grandmother. They were living in a city house. Now Kushwant Singh started going to English medium school in a bus. अब क्या हुआ? अब वो बस से जाते थे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में where everything is taught in English. And grandmother was not able to go, with Kushwant Singh. Not only this, grandmother was also not able to understand what was taught in the school, because in school everything was taught in English. स्कूल में सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाती थी. Sometime grandmother also asked Kushwant Singh कि क्या पढ़ाया जाता है, तो Kushwant Singh बताते थे कि today I study about science, this that. And sometime Kushwant Singh also tell that today we have dance class. आज हमने डांस क्लास या सिंगिंग की क्लास ली. और ग्रैंडमदर को ये बातें एकदम पसंद नहीं थी. She did not like that dance and singing should be taught to her grandson, क्योंकि उनका मानना था these dancing and singing are the work done by mean type a certain group of people. एक निश्चित ग्रुप के लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं. और good people from good society, good family, they must not learn this. ऐसा grandmother की सोच थी. So that's why grandmother dislikes city school. फिर क्या हुआ? After school in city, when Kushwant Singh grown up, now Kushwant Singh has been given another room जिसमें वो study करते थे. Then he moved to college too. Now Kushwant Singh planned to go abroad. अब Kushwant Singh को कहाँ जाना था? Abroad जाना था for his further studies. And Kushwant Singh को ऐसा लगा कि I would not able to meet my grandmother because this is last meeting.
Grandmother uh, come to the station, and grandmother came to the station along with Kushwant Singh, or she was silent at the station. She was not speaking anything. Kushwant Singh grandmother touched किस कुशवंत सिंह फॉरहेड, और कुशवंत सिंह को ऐसा लगा कि ये मेरी और ग्रैंड मदर का लास्ट टच है. आफ्टर दैट देयर इज नो चांस, क्योंकि ग्रैंड मदर बहुत एज्ड हो चुकी थी, तो देयर वाज नो चांस ऑफ मीटिंग अगेन. बट यू नो व्हाट, व्हेन आफ्टर 5 years completing his study, Kushwant Singh returned back. He once again find grandmother there only waiting for Kushwant Singh. ठीक है. And after seeing Kushwant Singh, grandmother was very happy, very excited. खुशवंत सिंह वाज वेरी हैप्पी, आल्सो हैप्पी कि मैं ग्रैंड मदर से दोबारा मिल पाया, जिसके चांसेस बहुत ही कम थे. सो ग्रैंड मदर रिटर्न बैक होम अलॉन्ग विद खुशवंत सिंह, और फिर वो क्या करती है, अपने आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं, सी कॉल्ड द फीमेल बिसाइड एंड नियर बाई हर हाउस, और सी प्लेड ड्रम एंड सेंग बैलड वॉरियर सॉन्ग. वो सॉन्ग उन्होंने गाया जो योद्धा जब युद्ध से वापस आते हैं, जो गाने जाते हैं. तो सेम दीज सॉन्ग्स सी सैंग आल्सो. लोगों ने फैमिली मेंबर टेल ग्रैंडमदर नॉट टू सिंग सो मच, शी माइट फेल इल, बट ग्रैंडमदर सुनती नहीं, किसी को ड्रम प्ले करती है और गाना गाती है. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, एंड इन इवनिंग शी हैड फॉलन इन, और शाम को क्या हुआ, ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो गई. शी हैड फीवर, डॉक्टर केम एंड सेड दैट इट इज माइल्ड फीवर, बट ग्रैंडमदर नोज कि उनका अंतिम समय आ चुका है. राइट, उनका अंतिम समय आ चुका है. सी सेड सी कीप ऑन चांटिंग मंत्रा, or she said to Kushwant Singh that no, don't take me to the hospital because it is my final time. I want to be peaceful. और वो अपने अंतिम समय में भी मंत्रों के चांट करती रहती हैं. और then suddenly she got departure, she got died. और इस तरह क्या होता है, कुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर डेथ हो जाती है. वन पॉइंट आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इन एजेंस विलेज, कुशवंत सिंह ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड डॉग इन द सेम वे इन सिटी हाउस. शी यूज्ड टू सिट इन द बरामदा, और लगभग 1 घंटे, around 1 hour, she used to sprinkle weeds and eating material to the sparrow. Thousands of sparrow used to come and sit on the shoulders of grandmother, on the head of grandmother, and eat whatever grandmother gives. ये उनका सबसे हैप्पी मोमेंट था in 24 hours. These 1 hour are the best hour of grandmother. ठीक है, तो ओवरऑल ये स्टोरी थी इस चैप्टर की. एंड वन मोर थिंग, after death of Kushwant Singh grandmother, when dead body of Kushwant Singh were put down, तो then sparrows, वो स्पोरे जो रोज आती थी, वो on that day they came, but they were sad, silent, not chirping. And Kushwant Singh mother had thrown a piece of bread for the birds, sparrow, but they did not eat that, remain silent. And when dead body of Kushwant Singh grandmother had been taken away, then all the sparrow flew away without eating the chapati. And next day when sweeper came, he found the chapati lying there and threw it into the dust. तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है that bond between human being and birds also, and between human being and human also. ये दिखाता है कि अगर आप रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और दोस्ती और बॉन्ड्स पेरेंट्स के बीच अपने ग्रैंडसन से बन सकता है on account of their love. And one more thing that we should take care, क्या है मैसेज कि we should take care our parents, grandparents also, because as we need time, as we need them in our time, they also need us. So that's all. ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर की मेन की पॉइंट. अब हम चलते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट. मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये सारी बातें पार्ट में दी हुई हैं, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली. अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. डिस्क्राइब द ऑथर ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट इन चैप्टर. पोर्ट्रेट का मतलब पिक्चराइजेशन. कुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है उनको डिस्क्राइब करिए, वो किस तरह की महिला थी. कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डीपली रिलीजियस. हाँ, वो बहुत ही रिलीजियस थी, स्पिरिचुअल थी. ओल्ड काइंड हार्टेड लेडी, राइट. सी ऑलवेज वोर वाइट साड़ी, हमेशा कैसा साड़ी पहनती थी, वाइट. केप्ट हर हेड कवर्ड, हमेशा सिर उनका कवर्ड रहता था.
कैरिड रोसरी, रोसरी का मतलब बीड्स के जो की स्ट्रिंग होती है, माला, जिसे आप रुद्राक्ष कहते हैं, रुद्राक्ष की माला है. Like that she used to keep, and see her wrinkled face and calm eyes reflected purity and peace. उनका जो चेहरा था वो wrinkled था क्योंकि वो aged हो गई थी, सेताल गई, but silent था. Purity और peace था उनके चेहरे पे. She was simple and dignified and devoted. साधारण जीवन जीती थी, respected थी और devoted to God थी. तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब कुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, तो ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं. हाउ डिड ग्रैंडमदर हेल्प ऑथर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन विलेज? बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं, कुछ चीज़ें जहाँ दी हैं उसको मैं रीड कर देता हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड फ्रॉम योर साइड आल्सो. देखो, इन विलेज ग्रैंडमदर केयर ऑफ नरेटर कंप्लीटली, कुशवंत सिंह का हमेशा ध्यान रखती थी. शी वोक हिम अप, बाथ हिम, ड्रेस्ड हिम, accompanied him to the school, उनको खाना देना, टिफिन पैक करना, उनके साथ जाना. while he study, जब तक राइटर स्टडी करता था, she read scriptures, manual scripture like religious book in the temple and feed dogs on the way home. ये उनका शेड्यूल था. वो मॉर्निंग से इवनिंग तक आप कह सकते हो कुशवंत सिंह के ही ख्याल में लगी रहती थी, उनके देख रेख में. व्हाट वाज ग्रैंडमदर रूटीन इन द विलेज? ग्रैंडमदर रूटीन वाज सिंपल एंड स्पिरिचुअल. ठीक है. She prayed from morning to night. सुबह से शाम तक प्रे करती थी. Help her grandson getting ready for the school. Visited the temple daily and feed his street dog. And her life revolved around religious and services. वो क्या थी? बहुत ही religious थी, kind-hearted थी. How did the relationship between the author and his grandmother change when they shifted to the city? मैंने बोला, बताया था. देखिए क्या लिखा, इन द सिटी द बॉन्ड वीकेंड, उनके बीच का जो रिलेशनशिप था थोड़ा वीक हो गया. क्यों? बिकॉज कुशवंत सिंह गॉट एंगेज इन द स्टडी एंड ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग विच had been taught in the English medium school in the city school. This was the reason. Grandmother could neither help with his lesson nor accompany him. ना तो अब तो साथ नहीं जा सकती थी, ना तो उनकी पढ़ा सकती थी कोई भी चीज़, because all the things were in English. She disliked the new subject and missed their own old companion. आगे देखिए क्या है. Why was the grandmother unhappy with the English school? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है. Do you think that Kushwant Singh grandmother like village school instead of city school? Why? क्वेश्चन ऐसे भी है, आंसर सेम है माय डियर. देखो, grandmother dislikes English school because it did not teach religious or good God scripture. सिंपल सा थिंग था. जो शहर के स्कूल है, सिटी स्कूल है, उसमें इंग्लिश मीडियम चीज़ें पढ़ाई जाती थी. एंड दे टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड सो मेनी सब्जेक्ट. दे टीच डांस, दे टीच अदर थिंग, बट दे डिड नॉट टीच अ सिंगल स्पिरिचुअल और मोरल थिंग्स. दिस इज द पॉइंट विच ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक. आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं. She was also upset when she learned that music was taught. I told you, जब उनको पता चला कि म्यूजिक और डांस सिखाए जाते हैं तो वो बहुत ही अपसेट हो गई. As she thought music was meant only for low class people, क्योंकि उनको लगता था कि जो म्यूजिक और डांसिंग का वर्क है ये केवल लो क्लास के लोगों के लिए. What was the grandmother reaction when the author decided to go abroad? ग्रैंडमदर का क्या डिसीजन था, रिएक्शन था, सॉरी. देखिए, सी remained calm, बहुत शांत रहती, कुछ बोलती नहीं. Composed. देखो, जब ग्रैंड मदर्स विलेज से सिटी की तरफ शिफ्ट करती हैं या सिटी में शिफ्ट करती हैं तो उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आ जाता है. सी रिमेन काम, वो बहुत कम बोलती हैं, राइट. उसके पीछे रीजन ये है कि कुशवंत सिंह वाज एंगेज इन स्टडी. ही वाज नॉट एबल टू सिट विद ग्रैंड मदर, ही वाज नॉट एबल टू गिव टाइम. एंड कुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर भी कुशवंत सिंह को की चीज़ों को उतनी समझ नहीं पाती थी, तो दोनों के बीच क्या है, डिटैचमेंट हो गया लगभग. She remained calm and composed. She did not express any emotion. मैंने बोला emotion. Only prayed continuously, kissed his forehead silently, and her reaction showed her inner strength and acceptance. उन्होंने क्या देखा, जब वो अब्रॉड जा रहे थे तो शांत थी, बस. she kissed at Kushwant Singh forehead. ये क्या दिखाता है कि एक्चुअली she was not happy with that, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब जो ग्रैंड सन है वो और भी दूर हो रहा है. But she remained calm. She did not speak anything. What did the grandmother do in her final day? Last के समय में जब वो डेथ होने वाली तो उन्होंने क्या कर रही थी? In her final days, she stopped talking to anyone. बात करना बंद कर दी. Kept praying and telling her beads of the rosary. She lay peacefully in bed and passed away quietly while praying. जब लास्ट समय आता, मतलब when she was supposed to die, then she remained calm, keep on chanting mantra, did not want to engage in any other work or something like that.
हाउ डिड द स्पैरो मॉर्न, मॉर्न का मतलब क्या होता है, सैड होना या अपना दुख एक्सप्रेस करना, सैड होना, मॉर्न द ग्रैंड मदर डेथ। देखो मैंने बताया आपको इन द समरी, द थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट साइलेंटली अराउंड हर बॉडी। ग्रैंड मदर क्या करती थी, सी यूज टू फीड दिस स्पैरो रेगुलरली, और ये जो स्पैरो है ना, ये दे यूज टू कम एंड सिट एट द शोल्डर्स ऑफ ग्रैंड मदर ऑन द इवन हेड आल्सो, और ग्रैंड मदर नेवर शेक देम ऑफ। So on the day of death, thousands of sparrows came. They sit beside the dead body of grandmother, and they remain calm. And they neither chirp nor anything. ना तो वो chirp की ना तो movement की, silent बैठी थी that day. Their mourning was natural and solemn. Silent थी because वो bird है. So they were silent. Silently they were expressing their sorrow, showing their love and respect for her, and say one more line आप इसमें ऐड कर सकते हैं, the bird did not eat the bread given by Kushwan Singh mother. It also shows that person. What value of the life does grandmother represent? grandmother क्या दिखाती हैं, क्या represent करती हैं, क्या moral lesson teaching देती हैं हमें? grandmother represent faith, devotion, selfless simplicity and patience and love. ये सारी चीज़ें grandmother दिखाती हैं. She embodied ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्रीफाइसेस। ये होता है ग्रैंड मदर का जो पिक्चर है, ये भारत के सारे ग्रैंडफादर से मैच करता है। इंडियन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर आर जस्ट लाइक दैट, दे आर फुल्ली डिवोटेड टू देयर ग्रैंड सन। ठीक है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रैंड मदर फीडिंग द स्पैरो? स्पैरो को ग्रैंड मदर फीड कर रही थी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? फीडिंग द स्पैरो सिंबलाइजेस हर लव फॉर लिविंग बीइंग। ये क्या दिखाता है, ग्रैंड मदर बहुत ही काइंड हार्टेड थी, इवन टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो, एंड स्पिरिचुअल आल्सो। देखो ये जो काम है, किसी की हेल्प करना, किसी को फीड करना, ये दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कॉमन मैन, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर ए काइंड हार्टेड, पीसफुल एंड जेन्युइन पर्सन। तो ग्रैंड मदर थी स्पिरिचुअल आल्सो, peaceful connection with the nature. It also reflects her loneliness and spirituality in her later life. Okay, so these are the short questions. I hope you got it. Please go through this. Let's see a few long question जो इसमें आपको 120 से 150 वर्ड तक लिखना रहता है। ये क्वेश्चन जो लॉन्ग है, these are also belong from the same, the portrait of the lady. Describe the relationship between author and his grandmother. How did it चेंज विद द टाइम? सिंपल थिंग, आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी चीज़ें लिख दीजिए, लॉन्ग आंसर आपका रेडी हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह वाज वेरी नाइस। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, ले आओ कर देता हूँ इसी को। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी क्लोज एंड अफेक्शनेट ड्यूरिंग द हिज चाइल्डहुड। बचपन में क्या था, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। सी वाज हिज कांस्टेंट कंपेनियन, गाइडिंग हिम एंड आस्किंग केयर ऑफ हिम एंड इन द विलेज। ग्रैंड मदर क्या करती थी, खुशवंत सिंह का ध्यान रखती थी from every point of view. However, after they moved to the city, अब change कहाँ से आया, when they moved to the city, when grandmother and grandson moved to the city, their bond weakened, relationship थोड़ा weak हुआ। Reason क्या था, because खुशवंत सिंह was engaged in the study and was not able to give the time to the grandmother. Arthur started going to an English school where the grandmother could not help him with his study or understanding his subject, क्योंकि grandmother को समझ में नहीं आती थी चीज़ें, all thing were in English, so ये भी एक रीजन था। When he went to university or later abroad, उसके बाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, फिर अब्रॉड फॉरेन चले जाते हैं स्टडी के लिए। देयर कम्युनिकेशन बिकम मिनिमल डिस्पाइट देयर इमोशनल डिस्टेंस। बातें कम होती थी लेकिन इमोशनली अटैच थे दोनों ही। द लव एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम रिमेन प्योर एंड स्ट्रॉन्ग। कॉमन सी बात है, वी लव अवर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, चाहे हम उनसे कितना भी दूर हो, ठीक है। द ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर साइलेंट प्रेयर एट हिज डिपार्चर and her peaceful death symbolizes her unconditional love and spiritual strength. ये क्या दिखाता है कि grandmother was really a spiritual lady and it also shows the unconditional love of grandmother towards Kushwant Singh. How did Kushwant Singh describe his grandmother appearance and character? grandmother क्वेश्चन क्या करे, कुशवंत सिंह ने ग्रैंडमदर की को कैसे पोर्ट्रेट किया, कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया उनकी पर्सनैलिटी को। तो खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंडमदर एज ए ओल्ड रिंकल्ड वुमन हु सीम्ड, लेट मी इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको और अच्छा दिखेगा। हाँ, यस, यस, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, चलो। हाउ डिड खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंडमदर?
appears and character. चलो देखो, खुशवंत सिंह describe his grandmother's. Wait. Okay. Kushwant Singh describe his grandmother as an old, wrinkled woman who seemed timeless. She wore a spotless white sari, covered her head, and constantly moved her lips in prayer while continuing her rosary beads. ठीक है. Her face was calm, silent था, reflecting purity, serenity, and faith. Her entire life revolved around spirituality and devotion to the God. पूरे जीवन क्या करती हैं? पूजा पाठ करती हैं और गॉड से डिवोटेड रहती हैं. She was symbol of simplicity. बहुत ही सिंपल थी. Discipline and kindness. She spent her day in prayer, spinning the wheel and feeding sparrow. दिन में क्या करती थी? स्पैरो को खिलाती थी. Even when she fell ill, और जिस दिन वो बीमार होती है, she showed dignity and peace, accepting the death as a natural part of life. ये क्या शो करता है कि she was really spiritual, kind-hearted and very good. What picture of rural and urban life do we get from the story The Portrait of the Lady? क्या पता चलता है? रूरल का मतलब गांव की लाइफ और शहर की लाइफ के बारे में क्या पता चलता है? The story beautifully contrasts the rural simplicity, गांव में क्या है? Simplicity है, and with urban modernization. In the village, life was calm, religious, community centered. गांव में क्या होता है? विलेज में लाइफ में इतनी भागदौड़ नहीं होती, साइलेंस होता है, लोग स्पिरिचुअल होते हैं. ठीक है. The grandmother and the narrator followed the routine of going to school and temple together. साथ में जाते हैं, symbolizing a life of devotion and purity. ये क्या दिखाता है कि दोनों ही devoted हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके अपोजिट क्या होता है? सिटी लाइफ वॉज मटेरियलिस्टिक एंड फास्ट पेस्ड. सिटी लाइफ क्या है? लोग भाग रहे हैं मटेरियलिज्म की तरफ, चीज़ों को पाने के लिए, and very fast life in the city. The narrator studies modern subject like English, science, and which distance him from religious value and from his grandmother. And Kushwant Singh represent the emotional and cultural gap created by the modernization between generation. ठीक है. और शहर में क्या होता है? शहर में यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल वेर यू आर रनिंग बिहाइंड द सब्जेक्ट, यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग ग्रेट एक्सेप्ट रिलीजियस, एंड ये सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो आपको स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस चीज़ों से दूर, मोरल लर्निंग से दूर ले जाते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंट. राइट. व्हाट रोल डू द स्पैरो प्ले इन द स्टोरी? स्पैरो का क्या रोल है माय डियर? द स्पैरो एक्ट एज ए साइलेंट सिंबल ऑफ प्योरिटी, लव एंड नेचर, कनेक्शन विद द ग्रैंडमदर. She shared a special bond with her, gathered around her daily to feed. और कुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है उनसे उस स्पैरो का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, और ये रिलेशनशिप डेवलप कैसे हुआ? इट इज़ अगेन ऑन द अकाउंट ऑफ प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. अदरवाइज एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग के पास आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि द पर्सन इज हाउ इज काइंड हार्टेड और प्लानिंग टू किल अस. ठीक है. एंड after her death, thousands of them sparrow came and sat quietly around her body and mourning what without a single chirp. Silently आके बैठती हैं. The silence symbolized deep sorrow and respect. और इनका silent क्या दिखाता है कि वो भी sad थी. And respect from grandmother. Through them, the author shows that the true goodness and spirituality are recognized and honored even by the nature. इससे क्या पता चलता है कि natural thing, human being or natural thing, whether it is plant or birds or animal, they also identify the spiritual person and spirituality and kindness of the person. अगर आप kind होगे तो even animals will help you and will be sad for you. Last question. How did the story The Portrait of the Lady highlight the theme of spirituality and acceptance of the death? भाई spirituality के पॉइंट को और डेथ को एक्सेप्ट करना, इस पॉइंट को कैसे हाईलाइट करता है? देखो, ग्रैंड मदर लाइफ वाज स्टीप्ड इन स्पिरिचुअलिटी. स्टीप्ड का मतलब फुल ऑफ. ठीक है. हर डेज बिगेन एंड एंडेड विथ प्रेयर्स. ग्रैंड मदर का दिन स्टार्ट होता है प्रेयर से और खत्म होता है. एंड सी लिव्ड अ सेल्फलेस पीसफुल लाइफ इवन व्हेन सी सेंस्ड हर डेथ अप्रोचिंग. जब उनको पता चलता है कि वो उनकी डेथ होने वाली है, She accepted it calmly, बहुत ही silently इस बात को accept कर लेती हैं. She did not fear death, instead she welcomed it with prayer on her lips. Her peaceful death show her detachment from the material world and her deep faith in God. Okay?
The sparrow, silent mourn, further adds a divine and spiritual touch to her passing, making it a serene, almost holy moment. The story beautifully convey the spiritual bring peace and even in death. Spirituality क्या ले आता है? Peace ले आता है even death पे. सब कुछ खत्म भी होगा तब भी आपको क्या मिलेगा? Peace, silence and happiness. So that's all from this chapter, portrait of the lady. ये सारा था summary और short question और long question मैंने cover किया है. If you go through all these things, all this question, you are able to give answer of any question to be asked in the exam. So dear, I hope you got each point very clearly. So see you in the next. Till then, you keep watching, keep studying, and if you are new to my channel, please do subscribe so that the new update from the channel you'll keep getting on. Good luck. Goodbye.